Hello everyone, SK Rout here. We will be starting the session. Previous year questions. Yeah? Last class रू हमें पाखापाखि 3-4टा सीरीज कर सारे 4टी सीरीज कर सारे आम PYQ उपरे आज बड़ा बड़ा क्वेश्चन अच्छी PYQ रो स्टार्ट कर दो आम ओके बाकी प्रिलिम पाखापाखि हो तेणु आम स्टार्ट करवा एवं कौन कौन अच्छी क्वेश्चन देखिए आज OAS रो क्वेश्चन भी किसी अच्छी OAS रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुरा प्लान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कले it expands your ideas concept clarity आसे so the more you solve work out previous year questions you will get a command over the about the nature of UPSC and OPSC examinations. That is the most important part of the things. हेतिमे मु कहे समस्त PYQ सॉल्यूशन क्लास गुरा देखो PYQ सॉल्यूशन क्लास गुरा देखिले तुमरो जो बेसिक फंडामेंटल कांसेप्ट गुरा क्लियर हो जिवो कारण बेसिकली यूपीएससी बा ओपीएससी रो परीक्षा गुरा बा जो एग्जाम जो क्वेश्चन गुरा कांसेप्ट ऊपर बेसी थाए तेणु कांसेप्ट क्लारिटी हेले आमे आराम से गोटे जिनस लिखि परिबा ठीक ना भूल ठीक अछि आरंभ करिया प्लाने अजिरो क्वेश्चन सेशन डायरेक्ट पळे आसले आमे ठीक ना कोन अच्छा ओके 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 ठीक है डायरेक्ट पळे आसे आमे अच्छा हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 1 थैंक यू फॉर वेटिंग क्वेश्चन नंबर 1 which of the following statement correct in respect of objective resolution of Indian Constitution? The author of this resolution was Dr. B.R. Ambedkar. It was adopted by Constituent Assembly on 22nd January 1947. The goal of this resolution was to declare India sovereign socialist democratic republic. Okay, and this resolution later framed as the preamble of the was later framed as the preamble of the Indian Constitution. Which of the following is correct? प्लान ऑप्शन जो पढ़िथिला ऑप्शन देखुछ ऑप्शन दुईटा अछि राजकिशोर नमस्कार बेटा तो दुईटा अछि त माने हमकु दुईटा खोजियो पड़ियो तार तो ऑप्शन हमकु रेस्ट्रिक्ट कर देला जे सब जाक ठीक नाही जदि ये भी 1 3 2 4 1 4 1 2 त माने दुईटा अदर ऑप्शन ठीक अछि could have answer ठीक है एटा तो भूल हम कारण डॉक्टर B.R. Ambedkar was not the author of the objective resolution. It was Jawaharlal Nehru. JL Nehru was the author. तो एटा भूल हम it was adopted by the constitution. एटा प्लान ठीक अछि 22nd January moved on in the assembly. नमस्कार नमस्कार रंजित नमस्कार बेटा ठीक अच्छे तो 22nd January 1947 रे इटा पास होता 13 January 13 December 1946 रे इटा मूव होता तेणु इटा ठीक अच्छी The goal of this resolution was to declare India as a sovereign socialist democratic republic नो सेतरे थिला sovereign independent republic प्रणाम स्वागतिका ठीक अच्छी तो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक से लिखता सॉवरेन आउटे इंडिपेंडेंट बटे सॉवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक एमती लिखा है सॉवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक लिखा है तेणु ये वर्डटा उसे काटी देते पर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखाला एवं सोशलिस्ट आउ सेक्युलर वर्डटा पछरे आड होइछि तेणु एटा ए दुटा वर्ड भल हेबनी तेणु सॉवरेन वर्डटा थिला किंतु एगुरा नथिला त माने ए स्टेटमेंटटा ही भूल अछि दिस रिजोल्यूशन फ्रेम्ड एज द प्रीएम्बल एटा ठीक अछि बुझिला त माने आंसर होबो कोन ना 2 and 4 आंसर होबो बी आंसर बी होबो पिलाने भल से देखो आंसर इज बी So that is 2 and 4. Yes, Swagatika, you are right. So that is there. B. Next, pilane. Consider the following statements.
Which of the following statements correct in respect of Constituent Assembly? The Constituent Assembly was constituted under the scheme of Cabinet Mission Plan. The total strength of the Constituent Assembly was 369. 296 were allotted to British India. 73 seats were princely states. अच्छा, कोटा ठीक है आंसर? Yes. Signing स्वागत टीका कह आउ किए अच्छ? Nobody is there. Join करनो तुम्हें क्लास पूरा दिन दिन कमी जाउछ टी अधिका दिया join करो क्लास सेशन पे so that others will be inspired. ठीक अच्छी? आ जाओ एटा प्लान ठीक अच्छी स्कीम ऑफ कैबिनेट मिशन ने स्टार्ट हितला एवं एटा 369 नथिला एटा 389 थिला एटा 389 थिला 296 अलॉटेड हितला ठीक अच्छी एटा 93 होइतांदा एटा 93 त माने एटा ठीक अच्छी एटा ठीक अच्छी त माने 1 and 3 4 काई 4 अच्छा 73 1 and 3 could achieve D. Yes, answer is D. Bujela, answer is D. The Constituent Assembly was constituted under the scheme of Cabinet Mission Plan. The total strength of the Constituent Assembly was 389. 296 seats were allotted to British India. এবং 93 seats were allotted to princely states, not 73 seats. ठीक अच्छे आसिया निज नेक्स्ट क्वेश्चन को consider the following statement pairs in respect of the Indian Constitution and pick up the right matchings. এটা এক্সাম হবো এটা পাবলিক কমিশন এটা এক্সাম হবো সে যাই পড়াইছি এটা হলো ইউএস এটা হবো গোটা হলো টর্ম আউট এ সোর্স কোটা ঠিক আছে টর্ম আর সোর্স ভিতরে কোটা ঠিক আছে জলদি জলদি কই দিও মানে জানছো আনসার জলদি জলদি কই দিও ओके चलो भाई चलते रहो जल्दी जल्दी आस क्लास को जल्दी आस रेस्पॉन्ड करो रे बोरिंग कहीं पाठ बोरिंग करते थाए कि पाठ जमा बोरिंग हवा कथा नु किए जाऊँगी क्लास को किए कौन शुणुची नहीं कि अच्छा हो ऑफिस ऑफ द गवर्नर एटा जो अच्छी एटा भूल अच्छी এইটা ঠিক আছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এটা ঠিক আছে ফ্রিডম অফ কমার্স এটা ভুল আছে এটা অস্ট্রেলিয়ারু আসছে ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ প্রিএম্বল এটা ঠিক আছে ল্যাঙ্গুয়েজ অফ প্রিএম্বল অস্ট্রেলিয়ান কহନ୍ତି কারণ তাঙ্করি প্যাটার্ন রে লেখা হইছি আমেরিকান भी লেখা হইছি বাট মোস্টলি বেসড অপন অবজেক্টিভ রিজলিউশন প্রিএম্বলস ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড অপন সো এটা তাহলে আমি কইবা কি 2 and 4 আর কারেক্ট C. बाकी ऑफिस ऑफ द गवर्नर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु आसी एंड जो पब्लिक सर्विस कमिशन तो देखिला तापर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन आसी ऑस्ट्रेलिया रु आसी तो से दीटा भूल अछि दीटा ठीक अछि से कहिछि कौन पिकअप द राइट मैचिंग्स राइट मैचिंग गुरा में देखिले तेणु ए 2 नंबर और 4 नंबर ठीक अच्छी आउ सब भूल थिला हम तो करेक्शन कले ठीक अच्छी टर्म सोर्स लास्ट ईयर रो क्वेश्चन एटा 2022 माने लास्ट ईयर लास्ट प्रिलिमिनरी रो क्वेश्चन एटा समस्त देखिथिबो फिर भी एटा हमें देखिबा 3C यस ठीक है नेक्स्ट आसिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. It is a form of judicial review. It is used to test the legality of any legislation by the courts.
The doctrine of basic structure of constitution gave the free hand to parliament to amend any part of the constitution. The constitution of India defines basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and socialism. Which of the following is correct? Number 4. Yes. ମାନେ basic structure ହେଲା ଗୋଟେ judicial invention. First of all, you remember ମନେ ରଖାଯାଉ कि basic structure ତତ୍ତ୍ୱଟା संविधान रे उल्लेख नथिला बा नाही. तेणु constitution does not mention or does not contain about anything about basic structure. किंतु preamble रे जो कथा गुरा लिखाई सेगुरा को बेसिक स्ट्रक्चर बोली कहा जाई पारे. तेणु किंतु कॉन्स्टिट्यूशन से मेंशन नहीं से शब्द जो दीटा बेसिक और स्ट्रक्चर ए दीटा शब्द संविधान रे कोडी मेंशन नहीं. इट इज ए फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू दैट इज राइट बिकॉज इन केस जोटा बेसिक स्ट्रक्चर जो अप्लाई करा जाए तेणु से रिव्यू करा जाए कि कोटा एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट करूची ना नहीं तेणु से गोटे फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू. It is used to test the legality of any legislation by the courts. एटा भी ठीक है. एटा भूल अच्छी doctrine of basic structure constitution doesn't give free hand to parliament. No. Or rather it restricts the amending power of the parliament. Basic structure कौन करूची ना पार्लियामेंट रो जो संशोधन क्षमता रही amending power तापरे लगाव तापरे कौन करूची लगाव लगौची restriction लगौची. पार्लियामेंट से बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रोविजन गुरा हला फंडामेंटल राइट्स हला फेडरलिज्म हला पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट हला बहुत सारा जिनस अछि रूल ऑफ लॉ हला सेकुलरिज्म हला सोशलिज्म हला ये सब बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात एगुडी को केबे भी अबोलिश करा जाय परिबो. तेणु बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट को फ्री हैंड दोनी रादर ताकू रेस्ट्रिक्ट करूची. तेणु सेटा भूल अछि ए कांसेप्ट भूल अछि. The Constitution of India defines no. Constitution does not define. There is no mention about basic structure. I told you basic structure theory was evolved during Kesavananda Bharati case versus State of Kerala 1973. एवं परे राजनारायण केस एंड योर मेहटा केस एंड बहुत सारा केसेस अच्छी जो विशाखा केस है बहुत सारा केस रे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कराई राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस रे से भी कही एसआर बोमाई केस है कि आमर कौन जो मिनर्वा मिल केस है सेमती एमसी मेहटा केस है बहुत सारा केस रे सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर लिस्ट को बढ़ाई देछि. किंतु बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहुए से पार्लियामेंट रे कोनोसी एक्ट है नहीं कि संविधान रे कोनोसी मेंशन नहीं. तो मैंने आंसर हम 1 and 2 ए हम. करेक्ट ऑप्शन सी माने कोटा से कौन कही आर करेक्ट पचार आर करेक्ट करेक्ट सी केमती हम 2 3 करेक्ट हेनी. डॉक्ट्रिन ऑफ गिव फ्री हैंड टू पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केमती हम. पार्लियामेंट कौन फ्री हैंड पाइब पार्लियामेंट पावर टाक रेस्ट्रिक्ट करागला अमेंड करि परिबनी. पार्लियामेंट से बेसिक स्ट्रक्चर गुरा को किसी डाइल्यूट करि परिबनी. तमाने बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट संशोधन क्षमता रे गोटे प्रतिबंधक सृष्टि करुची. तेणु फ्री हैंड केमती दउची. ठीक है. That is all about the answer is A. Got it? Next question. Next question plan asiba. At the national level, which entity is responsible for enforcement of regulation of Digital Personal Data Protection Act? आ भर किए डिजिटल पर्सनल डीपीडीपी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आ भर कोटा आ भर किए जो एक्ट को इम्प्लीमेंट करुच्छ. which implements the act. 5 number A, MeitY, Ministry of Electronic and Information Technology. MeitY. किंतु आंसर सेठी नुहे. स्वागतिक आंसर सेठी नुहे. MeitY is not answer.
मेटी है नोडल मिनिस्ट्री बट इम्प्लीमेंट किए करिवो ताकू डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया under established under this act b enforcement ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି MEIT is the nodal body nodal agency but data protection board of India is the major body for implementation of MEIT Ministry of Electronic and Information Technology is the nodal ministry यदि को मिनिस्ट्री अंडर रे आसिला ताला आंसर MEIT हो किंतु को बॉडी एनफोर्समेंट करिवो से डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया जोटा कि MEIT अंडर रे एस्टैब्लिश हबो आर तो एनफोर्समेंट हेइनी आर एनफोर्समेंट पे डेट ए पर्यंत आसीनी बोधे ठीक अछि डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड यस गॉट इट वेरी गुड नेक्स्ट आसीबा चलो भाई चलते रहो एंट्री ऑफ 5 लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल एंट्री 5 एटा मो देखी दे एंट्री 5 लास्ट ईयर पढ़तला एंट्री 5 कौन अब एंट्री 5 में क्या है बता दो क्या है एंट्री 5 में एंट्री 5 में क्या है स्टेट लिस्ट में क्या है स्टेट लिस्ट गोटे लिस्ट मु डिस्कशन करिछि लिस्ट गुरा ताकू तुमे टिके आउटे प्रैक्टिस करिवो आ गोटे क्लास भी आनिबा तापरे ठीक है एंट्री 5 टा लोकल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट देखिबो तुमे मोटे करिथिली एक रे पब्लिक ऑर्डर आसीबो दुई रे पुलिस आसीबो तीन रे हाई कोर्ट सर्वेंट्स चार रे प्रिजन्स रिफॉर्मेटरीज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर साइट रू तुमे लिस्ट काढी टिके नजर कर देबो ठीक अछि एंट्री 5 कथा पचर स्वागत ठीक है एंट्री 5 लिस्ट अप टू 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लोकल गवर्नमेंट यस लोकल गवर्नमेंट तो डी हवंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रेकमेंडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत एट विलेज लेवल आ भितर किए रेकमेंड करथिले न्याय पंचायत बा जुडिशियल पंचायत एट विलेज लेवल for adjudication of tribunals न्याय पंचायत के कहितला which पंचायत yes put the answer Lord Ripon yes आउटे क्लास आनिबा डेफिनेटली मु लिस्ट ऊपर मु भी सैटिस्फाइड नहीं सेटा आउटे भलो क्लास टे आनिबा पिला सेटा बहुत डिमांड करछंती कि सर लिस्ट केमती आम बुझा तेना आनिबा टिके प्रिलिम टा सरी जाओ आम धीरे धीरे आनिबा ठीक अच्छे तो न्याय पंचायत माने जो जुडिशियल पंचायत वाज रेकमेंडेड बाय अशोक मेहता कमिटी yes Ashok Mehta committee was appointed in 1977 by Moraji Desai government. It is the second commission after Balwant Rai Mehta committee. It had made several recommendations and prominent recommendation was constitutionalization of Panchayat Raj, two-tier system, direct election and so many things including the Nyaya Panchayat. Okay? So D and GVK Rao, all these things. Mohan Kanda committee, I don't have any idea, but still it might be related to Panchayat Raj. ठीक है D. Next receiver. With reference to Ayushman Bharat Digital Mission, consider the following. इटा तो ही थिला. Seamless. इटा काली हम करिथिले छाड़ दे. इटा काली कराइछ. 8 है. Which of the following statements are correct in respect of Article 243 of the Constitution?
Look at the articles clearly. Article 243. Article 243 deals with what? Deals with what? Composition of panchayats. Okay, the legislature, ठीक है, 243C, এটা অপশন কোন আছে দেখিবা, অপশন আচ্ছা 1 and 3 এমতি আছে নাই, কোন হবে আনসার, তাহলে দেখিবা কোটা করেক্ট লাগুছি। Article 243D provides representation of women to the office of the chairperson in the panchayat at village level. I is related to power to levy taxes by panchayats. 243J is related to ban on the courts to call in question in the elections. Could have answer. Eh? Okay, representation of chairperson of panchayat at village level, in the panchayat at district level. Okay, তারপরে 243D টা প্ল্যানে provides representation of women to the office of chairperson in the panchayat at village level. এইটা ঠিক আছে। Okay, so you can say 2 is correct, 2 is correct. ଆଉ ରହିଲା ତୁମର କ'ଣ ନା I, 243I କ'ଣ ଅଛି? Two 243I is related to power to levy taxes. এটা ভুল ଅଛି, power to levy taxes. যে এটা বোধে যেটা ঠিক আছে, যেটা কোন হবো? Article J to call in question. No, এটা যেটা ভুল ଅଛି, তো এটা 1 2 করো, 1 2 করতাম, দেখে তো ডিটেলস টিকে 1 2 করো, 1 2 আছে অপশন, 1 2 আছে, এটা করতে 1 2 সি ডিটেলস দিয়ে দিয়েছে আর্টিকেল গুলো। yes yes yes, बहुत पिला आसिगलानी, बहुत पर बहुत कथा बटम टॉप रे ग्राम पंचायत पंचायत समिति बढ़िया कथा। नेक्स्ट आसीबा 9 नंबर, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसीट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिटेड टू। 7 नंबर 9 नंबर, 9 नंबर क्या होगा बता दो 9 नंबर क्या होगा? जहाँ सब all revenues received by the union government by way of other receipts, taxes and other receipts are credited to consolidated fund of India. C.
Plan a consolidated fund of India is contained in Article 266. Every state has consolidated fund and the union government has its consolidated fund. And the consolidated fund is kept under the custody of Parliament. No money can be sanctioned from the consolidated fund of India without an authority of law. Contingency fund is put at the disposal of the president, and president can make advance from the contingency fund of India without the parliamentary approval, but that will be approved by Parliament later. So it a contingency 267. And it so that is all about the question number 9. When the annual union budget is not passed by the Lok Sabha, जेतबेले annual budget ta pass न होबो, when annual budget is not passed by Lok Sabha, what will happen? बता दो what will happen? जेतबेले पिलाने annual budget न pass होबो माने yes, जेतबेले annual budget pass होबो नहीं ता अर्थ सरकार रो मेजॉरिटी नहीं Lok Sabha. तमने the budget is modified and presented again, no. The budget is referred to the Lok Sabha for suggestion, no. The Union Finance Minister is asked to resign, no. Then option D of Prime Minister submits resignation of the Council of Minister, answer about D. Annual budget pass हो नहीं माने, annual budget pass हो नहीं माने, गवर्नमेंट रो मेजॉरिटी नहीं, तेणु मेजॉरिटी नहीं मानने गवर्नमेंट रिजाइन कर। एनुअल बजेट हो, कट मोशन हो, कोनोसी बिल हो कि मोशन ऑफ थैंक्स हो, जदि पास न हला तार तो गवर्नमेंट रिजाइन करी। एनुअल बजेट हला कि कोनोसी बिल हला कि कट मोशन हला कि तुमरो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स हला कि से जो बजेट रो आउ एनी बिल हैला कि तुमरो जो कौन कट मोशन हैला कि मोशन ऑफ थैंक्स हैला एगुरा जदि पास न होबो ताले गवर्नमेंट रिजाइन करियो तार तो गवर्नमेंट रो मेजॉरिटी नहीं हो कोन ठीक अछि। नेक्स्ट आसीबा with reference to the commission of finance commission of India, which of the following statement is correct? Yes, Swagatika, you are right. The plan देखो Finance Commission of India provided under Article 280 it is a major constitutional body which Finance Commission रो basically तो तीनटा function मु भाबुची माने basically मु कहे गोटे ला distribution of net tax proceed between the center and states, out determine the grants into the states, granting aids to the states, and also suggest measures for augmentation of resources for local bodies. Then major jinsa tinta. Tamane Finance Commission of India is a recommendatory body. It is not a permanent body. Rather, it is appointed by President every 5 years. So ये जो फंक्शन गुरा देइछि इट एनकरेजेस इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ता काम सेटा नुह। फाइनेंस कमिशन रो काम होला देश रे जते टैक्स प्रोसीड्स अछि टैक्स कलेक्शन होउछि नेट टैक्स कलेक्शन कुछ राज्य और केंद्र और राज्य मध्य रे बांटिबो। इट आल्सो डिसाइड्स द शेयर अमंग द स्टेट्स को राज्य केते नब्बो सेटा भी से डिसाइड करे। देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया applied by Finance Commission while devolving funds to the states. राज्य मानन को जत्ते बड़े अंशधन बा फंड्स फाइनेंस कमिशन रेकमेंड करे बहुत क्राइटेरिया मेंटेन करे। इनकम डिस्टेंस हैला, एनवायरनमेंट इकोलॉजी हैला, फॉरेस्ट हैला और परफॉर्मेंस हैला सब देखि कि दिया जाए। तेनु एटा भूल हबो। It facilitates the proper distribution of finances among the public sector undertaking. एटा भी नुह ता कामो। It ensures transparency in financial administration. एटा भी ता कामो नुह। सेटा Comptroller Auditor General of India रा कामो। None of the statements given above is correct. एटा ही आंसर हो। आंसर डी हो पिलाने
तेणु ये जो क्वेश्चन टा आम देखुचे एथुरु आम कौन गेस करुचे तार तो बेले बेले एमती क्वेश्चन आसे जोटा पचार थिबो कोटा जोटा पचार थिबो कोटा ठीक किंतु सब भूल थिबो तेणु सेटा देखिया पड़िबो ता माने नु कि आम ऑप्शन देइछ माने सेटा ही ठीक हबो फाइनेंस कमिशन रो काम हला केवल रिकमेंडेशन दबो distribution of money between central and states, decides the share among the states and also determines the grants in aid and suggest measures for augmentation of resources for increasing supply by devolution to local bodies. तेणु इटा आंसर डी हम 11. Answer 12. The Prime Minister of India at the time of his or her appointment need not necessarily be a member of the House of the Parliament but must become a member of one of the houses within 6 months. Need not necessarily be a member of the Houses of Parliament but must become a member of the Lok Sabha within 6 months. Must be a member of one of the Houses of Parliament, must be a member of Lok Sabha. What is the things? 11, 12 kata kochi, 12. Look at the question 12 and kindly answer the question. ये चलो चलते रहो कौन हबो को प्रिलिम पे लिस्ट रे कौन कौन पढ़िबो देखि देता लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 गोटे नजर पका कौन पढ़ो तो आम सेमती कहीपरि कौन कौन से जहाँ इच्छा हम पकईदे ठीक अच्छे आ जो धर एबे धर आमर जो फॉरेस्ट है कि इकोलॉजी है बायोडाइवर्सिटी है कि जो सेगुरा जो जिनस गुरा अच्छी कौ कौ लिस्ट केते नंबर अच्छी तो सेगुरा ठीक अच्छे एटा देख प्राइम मिनिस्टर जे प्राइम मिनिस्टर नीड नॉट नेसेसरीली मेंबर एटा ठीक हम एनी हाउस प्राइम मिनिस्टर जी हम सी अपॉइंटमेंट समय पार्लियामेंट रो मेंबर हवा आवश्यक नहीं he can be later become a but he will be a member continue to be a member कहीं सेमती ना जे से मेंबर न होले चलिबो मेंबर न होले चलिबो अपॉइंटमेंट हे जिवो किंतु within 6 months he will secure a seat in any house of Lok Sabha, any house of parliament. Otherwise, he will have to quit, resign. तेणु जे प्रधानमंत्री हम सी तार निजुक्ति समय लोकसभा कि राज्यसभा सदस्य न थई पारे किंतु निजुक्ति परे बा अपॉइंटमेंट परे सी कौन सी गोटे हाउस रो बा सदन रो सभ्य हवा आवश्यक जदि सी सभ्य न हो पाइले 6 मास भितर तांकु पदवी इस्तीफा देवा पड़ो ये मन रखा जाऊ कि भारतर 3 जन प्रधानमंत्री राज्यसभा आसछन्ति ठीक अच्छे हाँ राज्यसभा इंदिरा गांधी एच.डी. देवगौड़ा मनमोहन सिंह ये 3 जन प्रधानमंत्री have been from राज्यसभा and the last was Manmohan Singh who was elected to became the prime minister when he was the member of Rajya Sabha later in 2004. Okay, and Indira Gandhi in 1966 became the member of Rajya Sabha and then later became the prime minister of India. And S.D. Devagowda also for a short time he was also from Rajya Sabha. So we have examples of 3 prime minister. एवं ये गोटे कथा मन रख कि इन केस ऑफ ब्रिटेन इन केस ऑफ इंग्लैंड बा ब्रिटेन द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द लोअर हाउस दैट मीन्स हाउस ऑफ कॉमन्स although we have borrowed the Westminster model or parliamentary model of UK but it is also a difference between the 2 systems because the British Prime Minister must be a member from the lower house whereas the Indian Prime Minister may be a member of lower house or upper house. So answer it A haba. Any one of the house. Look at the question with reference to the Delimitation Commission. Consider the following statements. Kali mu kahitili. Which of this
state the orders of that এটা প্ল্যান টিকে ভুল আছে এটা 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 এক্সট্রাটা রহি যাচ্ছে এটা কাটি দিও এটা একটা এক্সট্রা কোন রহি যাচ্ছে ভিতরে এইটু আরম্ভ করো the orders of the delimitation commission cannot be challenged in a court of law when the orders of the delimitation commission are laid before the Lok Sabha or state legislative assembly they cannot effect any modification এটা ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ କି ଯେତେବେଳେ ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନ କାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ତୁମକୁ କି ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନ କେତୋଟି ତିଆରି ହେଇଛି 4ଟି କମିଶନ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା କହିଥିଲି ତୁମକୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 82 ତାର ପ୍ରଥମ ଆର୍ଟିକଲ୍ ରହିଛି ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ତିଆରି ହୁଏ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟୋରୀ କମିଶନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ କମିଶନ ନୁହଁ ଏବଂ ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନ ଇଜ୍ ଦ ଅଟୋନୋମସ୍ କମିଶନ ଏବଂ ତାର ରେକମେଣ୍ଡେସନଟା ना कोर्ट रे चैलेंज करी हेबो ना पार्लियामेंट बा लोकसभा की विधानसभा तो बदलाई दे परिबे ठीक अछि सो दैट इज व्हाई ए डिटेल का स्टेटमेंट ठीक अछि सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट काली मु कहितिले कथा तनो आ विशेष डिस्कशन करूनी आगु जिबा यस यस बोथ हबो बोथ करेक्ट 13 नंबर बोथ करेक्ट यस आसियो नेक्स्ट क्वेश्चन को What will flow if a money bill is substantially amended by Rajya Sabha? What will follow if a money bill is substantially amended by Rajya Sabha? जदि गोटे मनी बिल substantially Rajya Sabha द्वारा amended है, you know money bill Rajya Sabha cannot amend or reject a money bill. It can make recommendations only. It can make suggestions only. So what will happen if Rajya Sabha amends a money bill? What will happen? The Lok Sabha may still proceed with the bill accepting or not accepting the recommendation of the Rajya Sabha. It is ठीक है. The Lok Sabha cannot consider bill further. The Lok Sabha may send the bill to Rajya Sabha for reconsideration. The President may call a joint sitting. None of the option is correct. There is no joint sitting in case of money bill because Lok Sabha has upper hand or superior position in the matter of money bill. So that is A. Yes. So answer is A. Next is your question number 15 ku. Which of the following statement is correct? In India, the same person cannot be appointed as the governor for 2 or more states at the same time. Correct, it's correct. It is correct no. Same person appointed he paribo governor hisabare. He can be appointed also. The judges of High Court of the states are appointed by the governor of the state and it is bhul achi. Tenu jodi bhul paibo seti bhul. Like governor of the states are high courts are appointed by the governor. There is a statement आगु पढ़िया किसी दरकार नहीं आगु जिते ठीक थिले भी किसी लाभ नहीं कारण भूल ही गलनी ऑलरेडी तो you must apply some tricks while reading out the options while going through the options you must apply some tricks. Don't be lethargic while attending prelim questions because you have shorter times नहीं कि टाइम और स्पेस को देखिए पड़ो आमको जाना पड़ो कि केते टाइम अच्छी आम पाखे एवं केते क्वेश्चन अच्छी तेणु सब गोटे प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करिवो कि केते जल्दी मु फास्टर आई अटेंड द क्वेश्चंस द कौन फास्टर द मोर आई विल कवर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस सो सेटा गोटे मेजर जिनस प्लान रक्षा करिवो तो ये ठीक अच्छे ये भूल अच्छी नो प्रोसीजर हैज बीन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर ये ठीक अच्छी कारण 156 रे टर्म कथा कहई किंतु दैट ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कथा कहई तामाने गवर्नर रिमूव होवा पे कोनोसी प्रकार कौन प्रोसीजर मेंशन कराइनी जेमती राष्ट्रपति रिमूव होवा पे प्रोसीजर मेंशन कराई सेमती गवर्नर तुमर रिमूव होगा कौन प्रकार रेस्ट्रिक्शन बा कौन प्रकार ग्राउंड नहीं ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ओके and in the case of union territory having a legislative setup the chief minister is appointed by the lieutenant governor no he is appointed chief minister of a union territory is appointed by the president
President of India appoints the Chief Minister of Delhi, Puducherry and also Jammu Kashmir. So they are not appointed by the Lieutenant Governor, because Lieutenant Governors are not appointing authority. They are government servants. They are not constitutional authority like the Governor of a state. And another thing remember कि with regards to the removal of the governor कर बहिष्कार प्रस्ताव विषय रे MM पुंची कमिशन कहितले कि should be removed by resolution passed by the state legislature in absolute or in special majority pass हबो से state legislature द्वारा भारंतु एवं पुंची कमिशन कर recommendation सरकार consider एपर्यंत हेइनी किंतु ता ऊपर तर्क वितर्क जारी रहिछि ठीक अछि तो आंसर हबो ए 16 क्वेश्चन गला प्लान 17 को आसीबा 16 the parliament can make any law for whole or any part of India implementing international treaties अंतर्जातीय ट्रिटी गुडी को इम्प्लीमेंट करिवार स्वतंत्र क्षमता रही पार्लियामेंट जातिसंघ सहित हो कि WTO सहित हो कि कौन सी भी अंतर्जातीय संगठन सहित भारत जहाँ सब चुक्ति पत्र स्वाक्षरित करुछि the agreements and the treaties signed by government of India with other countries or with other institutions are implemented in the country under the supervision of central government. And parliament can enact any law with regards to the implementation of foreign treaties and obligations without the consent of the state. That is, you remember, is a part of the centralistic tendency of the state in India. जो आम कहूचे क्वासी फेडरल कंट्री कथा कहूचे क्वासी फेडरल ये भी गोटे कारण ये भी गोटे दर्शेवा जिनस आइडेंटिफिएबल aspect of Indian polity that whenever any international treaties and agreements are implemented in the country, no state is consulted. Parliament is the sole authority, or the central government is the sole authority in implementing the things. And you know कि under Article 253, the Parliament has been empowered, authorized to make provisions with regards to state list while implementing the international treaties and agreements. So that is therefore without the consent of the any state. D. ठीक है आगे चलो 17. Consider the following statement. The Council of Ministers in the Centre shall be collectively responsible to the Parliament. The Union Minister shall hold office during the pleasure of the President of India. The Prime Minister shall communicate to the President about the proposal for legislation. Which of the statement given above is correct? The Council of Ministers in the Centre shall be collectively responsible to Lok Sabha. It is the Lok Sabha. Parliament है गले कौन होगा दीटा हाउस है जीव तनु इटा भूल होगा The Union Minister shall hold office during the pleasure of the President. इटा ठीक अच्छी The Prime Minister communicate इटा ठीक अच्छी तो मैंने 2-3 are correct 2-3 are correct नहीं की तो आंसर देखिए 17 नंबर आंसर 2-3 are correct 2-3 are correct 2-3 yes B. Consider the following statement. Question 18. The chairman and deputy chairman of Rajya Sabha are not the members of the House. While the nominated members of the House, two houses of Parliament, have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the Vice President. The chairman and deputy chairman of Rajya Sabha is provided under Article 89 of the Constitution. It Article 89 roch. They are constitutional bodies. Article 89 re. Article 89 re chairman और deputy chairman कथा कहिछि. सेमाने भी house रो presiding officer बड़े role करंती बा सेमाने भी highest authority house रो. तेनु एटा भूल अछि. Chairman और deputy chairman of राज्य सभा समस्ते Parliament member नोती कारण जे chairman से होची vice president of India and remember vice president is not a member of any house of Parliament. तो सेटा भूल ही
Remember, only deputy chairperson of Rajya Sabha is a member of the Rajya Sabha. While nominated members of the House of the Parliament have no voting rights in the presidential election, they have the rights of vice. Yes. राष्ट्रपतिंकर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रे इलेक्टोरल कॉलेज रे केवल इलेक्टेड मेंबर माने रहंती तेणु नॉमिनेटेड मेंबर रहंती नाही किंतु वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे ऑल मेंबर्स डू पार्टिसिपेट तेणु ऑल मेंबर माने नॉमिनेटेड आउ इलेक्टेड तेणु सबु मेंबर सदस्य माने भाग नियंती राष्ट्रपतिंकर इलेक्शन उपराष्ट्रपतिंकर आर्टिकल 66 अंडर रे उपराष्ट्रपतिंकर निर्वाचन होता है एवं निर्वाचन कमिशन बाय इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो से समय सबु सदस्य माने ऑल मेंबर्स मीन्स elected and nominated members do participate in the election of the vice president, and remember, in the election of the president the nominated members do not participate in it, but they can participate in the impeachment of the president. Impeachment. So answer it is 2 3 habo to eta se kon kochi 2 acha only 2 b habo plane next asiba 20 number जे जिबारी अछि the power to increase the number of judges in the Supreme Court of India is vested in कदम कदम बढ़ाए जा खुशी का गीत गाए जा ये जिंदगी है आईएएस की आईएएस बनते जा नहीं की तो अब चलेंगे आईएएस बनने के लिए आईपीएस बनने के लिए देर नहीं है भगवान की घर देर है लेकिन अंधेर नहीं ठीक है लगे रहो जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचे हो until you reach your goal don't sleep or don't lose heart एटा कौन हम 19 नंबर ए कहला स्वागतिका 19 नंबर ए कहला आउ की आंसर कहबो कि रे आउ की आंसर कहबो कि रे बी कहला यूरो फाइटर टाइफून नाटा को भलो नाटा यूरो फाइटर बड़े आंसर दउची एटा पार्लियामेंट हबो बी कारण पार्लियामेंट ही डिसाइड करे सुप्रीम कोर्ट जजेस नंबर ऑफ एक्ट 2019 रे नंबर ऑफ जजेस एक्ट पास हेची जोतरे सुप्रीम कोर्ट जज को संख्या इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस नहीं कि 34 कर दिया जाए 33+1 so supreme court number of judges act has been enacted by parliament from time to time. Remember, the strength of parliament is supreme court is decided by parliament, whereas the strength of high court is decided by the president. So answer B opilane. Let's proceed to the last question of the session. Which of the following be said essentially the parts of inclusive governance? Quote inclusive governance. You understand what is the meaning of governance means what? Better administration, good governance. Governing administration. Governance means कौन? Governance माने सुशासन, शासन व्यवस्था. ठीक है जी? Yes, I quote by the president. US right. Yes. ओके सो देखो गुड गवर्नेंस रे तो बहुत सारा जिनस अच्छी बहुत सारा एलिमेंट्स अच्छी बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक अच्छी आम मेन्स पढ़ला बेले सेटा को पढ़िबा सेटा मु भल से बुझे देबी गवर्नेंस पार्टटा बहुत इजी पार्टटा सेटा आराम से तुम लिखि परिबो सेतरे बहुत फ्री हैंड रहे कारण सेतरे बेसी थ्योरी किछि नाही बेसी लेजिटिमेसी किछि नाही तुम्हें ताकू निज ये भी लिखि पारिबो बहुत बढ़िया जिनसटा एवं सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन जो बसीतला ये बिराप्पा मोइली कमिशन तार रिकमेंडेशन गुरा गुड गवर्नेंस ऊपर थिला तेनु ताकू लिंक करके हमको पढ़िया पड़े सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन जो 15 रिपोर्ट्स गुरा देइचंदी 15टा रिपोर्ट देइचंदी विभिन्न आस्पेक्ट ऊपर गुड गवर्नेंस रो एवं केमती टेक्नोलोजी ड्रिवेन सोसाइटी रे केमती गुड गवर्नेंस आउरी बेटर करी हबो केमती आउरी लोक मानको सुशासन दिया जीवो जो सुशासन बा राम राज्य प्रतिष्ठा करा जीवो से विषय रे विशेष भाव रे आलोचना तर्क वितर्क जारी रही ठीक अछि तेनु परमिटिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंस एटा गोटे नुह एटा गोटे किछि कारण नुह
establishing effective district planning committee in the all district एटा गोटे parts of inclusive governance of district planning committee हला पंचायत और म्युनिसिपालिटी को नहीं गठन करा जाए एवं सेतिरे पंचायत और म्युनिसिपालिटी रो सदस्य रहंती जिल्ला रो डेवलपमेंटल प्लानिंग पाई तेणु सेटा ऑब्वियसली इंक्लूसिव माने कोन सबु वर्गर व्यक्ति मानक प्रति जोड़ा उपयोगी सेटा इंक्लूसिव कहंती inclusive means the growth which is applicable or which has effect for each and every person, every member of the society, every citizen of the country. It is called inclusive growth by inclusive governance. Committees increasing the government spending on public health सेटा भी inclusive कारण बहुत सारा लोक अच्छी जो माने मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आर देयर ए सब्सटेंशियल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आर देयर हु आर अनेबल टू अवेल गुड हेल्थ फैसिलिटीज आम देश में एबे भी बहुत लोक अच्छा बहुत संख्यार लोक अच्छा जो मैंने स्वास्थ्य खर्च करने पैसा नहीं तेणु जदि इनक्लूसिव गवर्नेंस माने हला जो मानकू कौन इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग गवर्नमेंट रो जो स्पेंडिंग अच्छी जो 5% 4% रहू तर अधिका बढ़ाई दिया जाऊ बोली बढ़ाई दिया जाए कोथरे इनक्लूसिव गवर्नेंस स्ट्रेंथनिंग द मिड डे मील सेटा भी गोटे गुड गवर्नेंस रो गोटे इनक्लूसिव गवर्नेंस रो गोटे एस्पेक्ट कारण पिला जो माने भूखा पिला जो माने गरीब पिला जो माने better on good on disadvantageous section pila they were not inclined to take admission in schools because they knew that if they go to school then they don't have any food to eat and their parents also are not in a position to provide 2 meals a day to the children therefore they did not go to school. But when midday meal scheme was introduced in 1985 by the midday meal scheme during Narasimha Rao government 1995 re midday meal scheme was introduced in country and still it is a very popular scheme and it is provided to there and was started yes in 1995 and 15th August 1995 रे मिड डे मील्स का स्टार्ट हेतला पीवी नरसिंह राव समय एवं एटा भी इंक्लूसिव गवर्नेंस काहे की ना एटा सेही लोक मान को टच करूची जो लोक मानकर पिला स्कूल को आसी पर नथले एवं दैट वाज ए नंबर सब्सटेंशियल नंबर सेटा भी बहुत थिला एवं 20-30% people were not able to send their children to school because they needed them and they thought that if the children went to school then they could not afford or arrange meals for them so they forced their children to work in factories or to work as the child laborers that in order to curb child labor in order to ensure that all children until 14 years of age are schooled or they go to school that is the goal so good governance right every aspect ei par plan to 1 2 3 that is sorry 2 3 4 answer habo C ठीक अछि 2 3 4 answer habo got it so that is there बाकी क्वेश्चन हमें देखिबा बहुत सारा eagerly enthusiastically जो माने बसुच अपियर करूच एवं पार्टिसिपेट करूच हम एमती बहुत लेंदी डिस्कशन आनी हम प्लान बारंबार कहिछि कि तुमरो प्रिलिमिनरी क्वेश्चन गुरा खाली नुह के एटा ओएसआईएस क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करूचे त तुमे जे न दउछ से भाबी एबे तो प्रिलिम डिस्कशन होछि मु काई बसी सेटा नै ई जो डिस्कशन और डेलिबरेशन माध्यम रे तुमे सिविल रो भिन्न भिन्न दिग ऊपर गुडा संपृक्ति गोटे विस्तृत आइडिया रखिबो चिंताधारा रखिबो जो चिंताधारा हेटा ही तुमको लिखिबारे साहाय्य करिवो ठीक अछि तेनु जॉइन as many number as possible because you need it so join the class tomorrow we have a marathon अछि एवं आमे सितरे सब प्रकार टॉपिक ये करिवु तेनु तुमे प्रिलिमिनरी दियो बा न दियो कि जॉइन करो एवं सितरे निश्चित भाବରେ बेनिफिट आसीबो then don't skip our classes on Ada 247 OPSC channel we wish you all the best for your future endeavor प्रतिदिन तुमको विश कराउची तेनु जीवन रे जेतेबेले सीनियर लोक माने तुमको विश करंती बा विश करूछंती निश्चित भाବରେ तार फल पॉजिटिव हबो
एवं बहुत सारा अड्डा 247 रो बैचेस ऊपर इनक्वायर हुआ आम मेन्स पर बहुत सारा बैच आणबू मेन्स पर आंसर राइटिंग बैच एसे राइटिंग बैच जनरल इंग्लिश बैच जनरल ओडिया बैच एगुरा सब पड़े से पाने तो से रेडी रुह एवं ज़्यादा से ज़्यादा समस्ते चेष्टा कर कि ग्रेट कौन चेष्टा कर कि जमती कौन प्रथम बहुत कम एज 27-25-26 भितर ओएस क्रैक हम तापर तुम्हें आईएएस हम को जो मानकर समय अच्छी समय नष्ट करनी बेस्ट विश यू ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी फॉर ए लॉन्ग टाइम ओके थैंक यू स्वागतिका yes 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 yes